तो यहाँ है आमर कैश फ्लो जोटा कि आम डायरेक्ट मेथड जो आम कहे तो आम पढ़ा कि डायरेक्ट मेथड कौन कि करछे। तो यहाँ हूँ तार फॉर्मेटा बेसिकली आम कौन ना कैश फ्लो स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड आइदर ऑफ टू मेथड जोटा कि आम कह गोटे ट्रेडिशनल मेथड एंड आउ गोटे कह कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जोटा आम कहे। The traditional method is a simple and basic procedure of preparing cash flow statement, and this method does not have any standard format to adopted. Inflows and outflows are not categorized as operating activities, investing activities, and financing activities separately. Like जो traditional method होची तो सेटारे कोना ना normal माने basic procedure किछि मतलब जोटा कि हमें कोचे ना जेमते हमें कोचे किछि स्टैंडर्ड रोची किछि फॉर्मेट रोची तार किछि सेमती नाही जोरा हमें कोचे कि हमें जेमती कैटेगरी करचे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रे कोटा हम नबा कि हमर जोटा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रे कोटा नबा कि हमर जोटा रहला कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रे कोटा जोटा हमें सेपरेटली मु तुमको कहतली कि तुम माने शो करबो तो ट्रेडिशनल मेथड रे एमती किछि नाही। ओके देन आसो preparation of cash flow statement under accounting standard 3 standard 3 on जाएगी the fundamental difference between मतलब preparation of cash flow statement under accounting standard 3 and जोटा कि हमारा one under traditional method is the reporting and presentation of statement मतलब केमती तुम्हें रिपोर्ट करछो केमती तुम्हें प्रेजेंट करछो स्टेटमेंट को एंड जोटा कि हमें कोच आर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमर दीटा मेथड अछि गोटे हमें कहि परिबा डायरेक्ट मेथड आ गोटे कहि परिबा हमें इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा डायरेक्ट मेथड रे कोन अंडर डायरेक्ट मेथड few steps need to be followed मतलब किछटा स्टेप अछि जोटा कि हमें फॉलो करबा को पड़िबो। तो फर्स्ट स्टेप कोची कोन ना the first step under the direct method of preparing cash flow statement is ascertaining different categories of cash received and cash payment जेमते हमें कोचे कि cash received from customer हो कि cash paid to suppliers जो में हमें जो supplier को cash payment करचे या फिर हमें कहि परिबा कि wages salary हमें जो cash payment दोचे एम्प्लॉइज मानकू सेटा रहला। देन नेक्स्ट स्टेप होची कि नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व प्लेसिंग देम टुगेदर अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो सब आसला ना कैश पेमेंट गुड़ा ताको हमें कोन करिया ना कैश फ्लो रो जोटा कि ऑपरेटिंग सेक्शन जोटा सेतरे ही प्लेस करेबा। Then the calculation are carried out by taking opening balance and closing balance of various accounts maintained by the business enterprise and arriving the net balance increase or decrease account जोटा हमें कहे जेमते हमें कहि परिबा कि cash collected from the customer या फिर interest received, dividend received, cash paid for inventory, then cash paid as wages, salary to employees, interest paid in cash या फिर tax paid in cash। तो सब कौन आम कहले कि सब हूँ आमर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो सब कहे से जाऊँ ना नहीं। अच्छा केमती करियो कैलकुलेशन ना फर्स्ट देख कि calculation of cash collected from customer जदि तुमे रिसीव करछो कस्टमर ठू आइदर तुमे कोन गुड सोल्ड करिके हो कि किछि सर्विस प्रोवाइड करिके तुम तो कैश रिसीव करबो ना ई केस रे। the sale figure appearing in the profit and loss account include both cash sale and credit sale। सेल फिगर टा मतलब जति कि तुमे सेल करछो तो तमरो से फिगर टा तमरो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे शोइंग करथिबो सेतरे कोन इनक्लूड थिबो कैश सेल थिबो एंड क्रेडिट सेल थिबो। कला in order to calculate the figure of cash collected from the customer कला कि किछि तुमको adjustment करिया को पड़िबो adjustment are required to be made in credit cell with the operating and closing balance of debtors and bills receivable। कोन ना तुम केमती काढिबो कि केते कैश कलेक्ट हेज मतलब सेल रे केते कैश हमें कलेक्ट करछे केमती जदि सेल तो कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दिटा जाक मिसी कथिबो ना केमती करिवो ना
ना देखो तुम्हारा देखो कि डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तुम पाखे थिबा बिगिनिंग रे देन ताधर ऐड कर देबो तुम्हारा क्रेडिट सेल देन ताधर लेस कर देबो कि डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर रे डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल केते रहले तो एथरू के हमें जानि परिबा कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम टोटल क्रेडिट सेल तो टोटल क्रेडिट सेल रो हम पाखो केते कैश कलेक्ट हेछि तो हम एथरू जानि पा then cash paid for purchase of inventory ଯେତେବେଳେ purchase କରୁଛେ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ନା the purchase figure appearing on the profit and loss account କହିଲା କି purchase figure ତ both cash purchase हो କି credit purchase हो appear ଥିବ କହିଲା କି in order to arrive at the figure that cash paid for the purchase of inventory କିଛି following जोटा कହୁଛେ ना adjustment କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ credit purchase ସହିତ केमती ना ओपनिंग और क्लोजिंग ने की क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल जेमती हमें करथला ना सेल टाइम रे करथले कि डेब्टर और बिल्स रिसीवेबल सेमती परचेज टाइम रे कोन ना क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ना बिगिनिंग ऑफ द ईयर रे केते रहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ताधर ऐड कर दियो क्रेडिट परचेज देन लेस कर दियो कि एंड ऑफ द पीरियड रे केते रहले तो हमको एठु जाना पड़िबो कि कोन ना जिते भी सब मतलब क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल जहाँ भी थिला तादर हमें केते कैश मतलब है कैश पेड टू टोटल क्रेडिट परचेस मतलब केते कैश टोटली पेमेंट करा है क्रेडिट परचेस टाइम रे जो तो क्रेडिट परचेस करथिले तो सेते ताहार केते पेमेंट हमें कैश रे प्रोवाइड करछे देन कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस जोटा हमें कहचे कि हमर जो एम्प्लॉय माननको हो कि जो हमें सैलरी दोचे या फिर दोचे तो एक्सपेंसेस सोडा कण हमर सब प्रॉफिट एंड लॉस रे शो करथिबो एंड द फिगर से जो फिगर टा ना अक्रुअल कांसेप्ट रे थिबो जोटा कि हमें कहचे कि हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट रे हम अक्रुअल कांसेप्ट को नौने है ना तो in order to calculate the actual figure of cash payment for expenses कि certain items will have to be added in the figure of expenses appearing in the profit and loss account whereas certain other items will have to be subtracted from the figure जेमती कह पारबे हमें कि जते भी हमर एक्सपेंसेस रही एक्सपेंसेस appearing in profit and loss account then ता देहरे ऐड करिवो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट रे लास्ट ईयर बैलेंस शीट जोटा रहउची ना ता देहरे जते सब हमर प्रीपेड एक्सपेंसेस रही देन प्रीपेड एक्सपेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस शीट दीटा ईयर भीतर हमें बाहर करूना कैश फ्लो स्टेटमेंट को जामे तो क्लोजिंग टाको ऐड करिवो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस देन ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें लेस करिवो तो एठी पाई गला हमें कैश पेड फॉर द एक्सपेंसेस तमे कहबो हमें प्रीपेड कथा कहले कहीं आउटस्टैंडिंग कथा कहलेनी देन यदि आउटस्टैंडिंग अछि कोन ना ओपनिंग एक्सपेंसेस इन ओपनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जहाँ भी रहला ओपनिंग बैलेंस शीट रो ताको ऐड करिवो लेस करिवो क्लोजिंग बैलेंस शीट रो तो सेठी पाई जिवो कैश पेड फॉर द एक्सपेंसेस देखो जदि प्रीपेड रहउची ताले हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट रो प्रीपेड को ऐड करछे एंड ओपनिंग बैलेंस शीट रो प्रीपेड को लेस करछे बट जते बेले केस आस जाउची हमर आउटस्टैंडिंग रो सेते बेले हमें कोन ना ओपनिंग टाको ऐड करूचे देन क्लोजिंग टाको लेस करूचे अच्छा तो नॉन कैश आइटम एठी नॉन कैश आइटम हमें नबा कि जेमती हमर रहला कि डेप्रिसिएशन रहला कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहला कि हमर गुडविल रहला तो तो जोड़ा कि हमर मतलब कोन पीएल रे हमको शो करूची appear in the profit and loss account as there is no actual outflow मतलब actually कैश रे किछि ट्रांजैक्शन हेइनी तो सेथि पई कि तो ये सब तो नॉन कैश आइटम को हमें रिकॉर्ड भी नबानी है ना नहीं देन देखो तो एटा जोटा कहले एटा हला हमर फॉर्मेट कि हमें केमती
कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करवा देख ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रे लिखला कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैश पेड टू एम्प्लॉइज एंड सप्लायर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट जहाँ भी रिसीव करछे इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड तो से तार जोटा बैलेंस आसे ब्रैकेट रे जोटा सेटा लेस वाला माइनस हेकी अछि त नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देन हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करंती देन यदि हमें परचेस करछे किछि मशीनरी या फिर सेल करूचे किछि जेन सेल ऑफ एन ओल्ड ऑफिस व्हीकल जत किछि भी एसेट किछि सेल करो तन सेटा आसला हमरो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रे जदि मु कहल तमे शेयर रे किछि या फिर लोन प्रोसेस करछो किछि या फिर कहि परबा कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंश्योरेंस इक्विटी इंश्योरेंस जदि हमें किछि कोन प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी कैपिटल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डिविडेंड पेड मतलब प्रेफरेंस शेयर हो कि इक्विटी शेयर हो जब हमें डिविडेंड पे करछो तो ये केस रे हमर आसीबो कोन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐड लेस करके हमर ही आसीबो तो हमें तले प्रॉब्लम करबा और टिके भल से जानि परिबा ओके तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बोथ ए बी सी को ऐड करके ही तुम जानिबो कि इंक्रीज होची या फिर डिक्रीज होची तो बिगनिंग पीरियड रे केते एंड एंड पीरियड रे कैश तुम पाखरे केते रहउची तो एटा हमें कैलकुलेशन करले जानि परिबा